we got something for you. Make sure to subscribe to our channel and hit the notification bell to find out. Stay tuned. Hi everyone, very good evening and welcome to BYJU'S Exam Prep. My name is Alpa Sharma and I hope all of you are doing very good today, and I hope all of you can hear and see me clearly as well. I'm so sorry for the rescheduling of the class. There was some technical glitch that we had to deal with, and that's exactly why I couldn't take the class at 4 p.m., the actual scheduled timing. And now that we have rescheduled the class, let's have our practice set 13 on top 50 RC topics that we're going to be doing. So if you guys don't know exactly what's going to be the agenda of the class, let me take you through that very quickly. Hi Ankita, good to see you back. I'll quickly take you guys through the agenda of the class. But a little bit of background. See, we've been having these practice sets for the last 12 classes. This is the 13th class. And in these practice sets, we try to pick up the popular topics, popular genres on which RCs have come or can come in the actual examination. So we have already discussed approximately 12 topics already. Today is going to be the 13th topic and a very interesting one, plus a very popular one as well. So the topic is going to be fiction. Hi, Humaira. Okay. I got your name correctly. अच्छा, अगर आप क्लैट की हिस्ट्री देखते हो, लास्ट 2-3 साल में ही फिक्शन पे एटलीस्ट 4 से 5 पैसेजेस आ चुके हैं. तो फिक्शन तो एब्सोल्युटली टच करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो आज मैं आपके लिए एक फिक्शन पे पैसेज लेके आई हूँ. करते क्या है, हम इन क्लासेस में हम वो कॉमन जॉनरेस डिस्कस करते हैं जिसपे पैसेजेस एग्जाम में आ सकते हैं. And accordingly, after we discuss the common genres, we solve an RC on the discussed topic or genre that we have. Today's topic is going to be fiction. I have an RC with 5 questions, exactly the same length, the same difficulty level. The RC is under 450 words, 5 questions per RC, exactly जैसा CLAT के एग्जाम में आता है. That's what we're going to be doing in the class today. तो start करते हैं डिस्कशन फिक्शन पे. कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, फिक्शन पे पैसेज आ जाए तो, and then we'll solve an RC. But before we go ahead with that, 2 important things. One, we have a free workshop happening on 9th of April, 6 p.m. where Nivedita ma'am is going to be discussing why should you choose CLAT as a career option. So if you are somebody who is aiming to sit for CLAT someday, please make sure that you sit for this workshop. But for that, you need to register yourself. Register karo, attend karo workshop on 9th of April, 6 p.m. And we have launched a CLAT 2024 comprehensive course. So if you are targeting CLAT 2024, comprehensive course है. Details आपको हमारे counselors इस number पे बता देंगे. Call them on this number and know more about the program. बात करना start करते हैं fiction की. Fiction पे passages, let me write that here. आएंगे तो कैसे आएंगे? Usually ये एक story देते हैं आपको. आपको याद है वो स्टोरी जो 2 साल पहले क्लैट में आई थी, द कैट इन द रेन. कैट के बारे में, रेन में बैठा है कैट, बहुत हंग्री है, स्टोरी है. आपको वो स्टोरी याद है कैसे एक डिटेक्टिव ढूंढता है कल्प्रिट को. एक ओल्ड वुमन है, उसने एक मर्डरर को देखा है मर्डर करते हुए. शी गोज इनटू द कोर्ट टू क्लेम दैट ही इज द कल्प्रिट, बट एक्चुअली में वो कल्प्रिट है ही नहीं शायद. स्टोरी है वो एक. So, fiction and fiction-based passages will have stories. I have yet another story for you today. It's a very interesting one. और अगर आपने ये स्टोरी पहले पढ़ी है तो मुझे बताना जरूर. बहुत पॉपुलर स्टोरी है, बट उसको हम पैसेज बना के लेके आए. So I have 5 questions on that. Questions कैसे हैं? सबसे पॉपुलर questions: मेन थीम क्वेश्चन, इन्फरेंस क्वेश्चन, वोकैबुलरी क्वेश्चन, टोन ऑफ द ऑथर क्वेश्चन, सारे पॉपुलर क्वेश्चंस लेके आए. तो उनको कैसे एड्रेस करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं, इफ यू हैव अ पैसेज ऑन फिक्शन, हाउ शुड यू रीड दैट? My one simple take on a fiction based passage: please use your imagination. When I say imagination, what do I mean here?
when you start reading the story, the moment I said there is a cat sitting in the rain, it's very, very cold, the cat is hungry, you have to imagine the situation in your head. In short, you have to picturize the situation in your head. If you create an image of the story in your head, retention of the story will be supremely easy and answering the questions will be even easier. आपको स्टोरी पे बार बार नहीं जाना पड़ेगा आंसर्स ढूंढने के लिए. सो फिक्शन बेस्ड पैसेज जो मैं आज आपको दूंगी, आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? यू विल इमेजिन द स्टोरी. एग्जैक्टली, थिंक ऑफ योरसेल्फ लुकिंग एट इट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू. मेक अ पिक्चर ऑफ इट इन योर हेड, इमेजिन इट. ओके, और वही इमेज यूज करके हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. विल यू बी एबल टू डू दैट एवरीवन? Send me a yes very quickly. I'll wait for your yes, and once you send me the yes, I'm going to show you the passage that we have. Jaldi jaldi say. Okay, yes. So here we go. All the best, everyone. Here comes our first page. First page padho, and then send me a done once you're done reading the page. I'll छोटा कर देती हूँ इमेज थोड़ा सा. Good. Read the first page and send me a done once you're done reading it. Send me a done once you're done reading the page. Hi, lovely. Please read the page. That's the first page of the passage. Jaldi jaldi पढ़ लो. Ankita, I'll give you a few more seconds. Let's go to page number 2, everyone. अच्छा, you must be wondering, ये बिग ब्रदर जो एक पॉपुलर प्रोग्राम है, शिल्पा शेट्टी वन बिग ब्रदर इफ यू रिमेम्बर, और उसी का इंडियन वेरिएंट बिग बॉस आपको देख रहे हैं. ये ना, ये जो बिग ब्रदर बिग बॉस है ना, ये इसी कहानी से ओरिजिनेट हुआ है.
I'll tell you which story is it. You can read the entire book later on, but this Big Brother and Big Boss, and that Big Brother and Big Boss is watching you, has originated from the same story. Back to the story, everyone. Read the story and send me a done. Done, everyone? Done. Just a minute. And here we go with the last page. Done? Done. Oh, last paragraph remains. Here it is. Big Brother is watching you. Okay, so now you know the extract is from 1984 by George Orwell. It's a book. Book की story बहुत लंबी है. क्या है? We will not talk about that. But then I've taken out the first chapter from the book और मैंने उसका एक extract आपको निकाल के यहाँ दिया है. ठीक है?
Let's look at the first question. I hope you've understood the main idea of the passage. Passage किस चीज के बारे में? I hope you were able to picturize this person's picture on the poster everywhere, inside the house, outside the house. The big brother is watching you. Question number 1. Which of the following is the main idea of the passage that we read from the book 1984 by George Orwell? Main idea out of the 4 options that you have. What's your answer, everyone? Think carefully and then tell me your answers. Main idea, everyone. What's your answer? I'll give you a hint. The option that covers up the entire passage is going to be the correct answer. एक ऑप्शन जो पूरे पैसेज की सारी चीजों को कवर अप कर ले, वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा. बी. ओके, लेट मी एक्सप्लेन द आंसर. ठीक है, पहले ऑप्शन ए समझो वो क्या बोल रहा है, बिकॉज इसमें कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट है, यहाँ भी कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट है. ए सेज द प्रोटैगनिस्ट, मतलब जो अभी मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, दैट इज विंसन स्मिथ. विंसन स्मिथ के बारे में अभी तक बात हो रही है. इट इज लिविंग इन अ सोसाइटी दैट्स कंट्रोल्ड बाय टोटलिटेरियन गवर्नमेंट. टोटलिटेरियन का मतलब होता है एक गवर्नमेंट जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है. ठीक है, ये ऑप्शन ए हो गया. बी सेज विंसन स्मिथ इज अ फ्रेल फिगर हु इज स्ट्रगलिंग टू मेक हिज वे अप टू हिज फ्लैट. फ्रेल फिगर का मतलब बहुत ही कमजोर है, वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है उसमें. एंड बिकॉज ही इज वीक फिजिकली, ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक हिज वे टू हिज फ्लैट. क्या पूरी कहानी विंसन स्मिथ के फिजिकली वीक होने के बारे में है कि वो कैसे अपने फ्लैट तक नहीं पहुंच पा रहा है? अंकिता, हुमायरा एंड लवली, क्या पूरी कहानी सिर्फ इसके बारे में है कि वो कितना कमजोर है और वो अपने फ्लैट तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो कितना स्ट्रगल करता है स्टेयर्स चढ़ने में? इज दैट व्हाट द एंटायर स्टोरी इज अबाउट? I don't think so, because after he reaches his flat, his weakness ends. He opens his window, he looks out. बाहर भी posters हैं, Big Brother is watching you. घर के अंदर भी posters हैं, Big Brother is watching you. तो उसकी weak होना तो सिर्फ स्टोरी का एक पार्ट था. ऑप्शन सी सेज बी गलत हो जाता है. सी सेज द टेलीस्क्रीन इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द सिटीजंस. वी डोंट नो दैट द टेलीस्क्रीन इज एन इंस्ट्रूमेंट, बट पूरा पैसेज टेलीस्क्रीन के बारे में नहीं है, सिर्फ एक लाइन है. वो टेलीस्क्रीन को बंद कर देता है, बट कंप्लीटली वो शट नहीं होता है टेलीस्क्रीन. So it could be an instrument used by the government to monitor and control the citizens. We're not really sure. D says the society depicted in the novel is black and lacking in color. Is bleak, sorry, and lacking in color. Bleak का मतलब हुआ एक ऐसी सोसाइटी जो बहुत लाइवली नहीं है, बहुत ही सैड है. ठीक है, सो डी और ए में से हमको चूज करना है. अब पैसेज में एक बार फिर से हम जाते हैं, मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली मेन आइडिया कैसे ढूंढते हैं. पैसेज शायद मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट ले लिया, बट इस डिफिकल्टी लेवल का पैसेज जरूर एग्जाम में आ सकता है. ये बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू बार बार क्यों आ रहा है पैसेज में? कौन है ये बिग ब्रदर? किसका पोस्टर है ये? क्या आप इस कहानी को नॉर्थ कोरिया से रिलेट कर सकते हो? क्या आप इस कहानी को थाईलैंड से रिलेट कर सकते हो? नॉर्थ कोरिया में द अल्टीमेट बिग ब्रदर इज द रूलर देयर, एंड
उनके पोस्टर्स हर जगह लगे होते हैं, वो आपकी लाइफ की हर चीज कंट्रोल करते हैं, राइट? दिस बिग ब्रदर इज द रूलर, द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर। उनके पोस्टर्स हर जगह लगे हुए हैं। इसका मतलब द गवर्नमेंट इज वॉचिंग यू। आप गवर्नमेंट के अग्रीमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो बार बार घर के अंदर भी बिग ब्रदर, टीवी ऑफ नहीं होता है, टीवी क्योंकि आपको मॉनिटर करने का एक तरीका है। लास्ट बाहर, घर के बाहर भी बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। द मेन आइडिया इज that a society that is governed by a totalitarian government is depicted in the passage. The correct answer is A. Understood everyone? Main idea कैसे निकालेंगे? Next question देखते हैं everyone. Question number 2. What can be inferred about the fictional society in which Winston Smith lives based on the passage from 1984? फिक्शनल सोसाइटी है, सब जगह गवर्नमेंट का कंट्रोल है, टीवी भी आपको मॉनिटर करने के लिए टीवी भी ऑफ नहीं हो सकता है, घर के अंदर भी पोस्टर है गवर्नमेंट के, घर के बाहर भी पोस्टर है गवर्नमेंट के, वो आपको हर जगह नजर रख रहे हैं, देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स भी उड़ रहे हैं आपके घर के अंदर नजर रखने के लिए। लास्ट पैराग्राफ में इट वाज गिवन, राइट? So now, what can be inferred about the fictional society in which Winston Smith lives based on the passage? I've given you a big hint here. Clear answer. Absolutely right, lovely. The society, the citizens are heavily monitored and controlled by the government, controlled by the helicopters, by the TV, by the posters, because totalitarian government है. C is the correct answer. Very good. तो देखो मेन आइडिया पता होने से हम इन्फरेंस क्वेश्चन बहुत इजीली निकाल सकते हैं. We need to know the main idea to be able to answer every other question, or rather almost every other question. What does the word sanguine mean as used in the passage? I'll take you back to where sanguine is written. Then you can choose your answer out of cheerful, angry, melancholy, or sarcastic. Here is sanguine. Read the line again and choose your answer then. Very good, Ankita. That was a C. Read the line again. His hair was very fair, his face naturally sanguine, his skin roughened by the coarse soap, his blunt razor blades, and the cold of the winter that had just ended. ठीक है? So sanguine का मतलब. Here you go. What does the word mean? Hair very fair, face sanguine. So sanguine is a word that has a positive meaning. Sanguine क्योंकि positive meaning है, sarcastic, melancholy और angry eliminate हो जाता है. Melancholy is sad. Sarcastic is like taunt. So cheerful is the correct answer. The face was cheerful. It was a worker and he had a cheerful face. Fair hair and cheerful face. So B is the correct answer here. Okay, next question. Question number 4. What is the purpose of the economy drive that is mentioned in the passage? Now, that's a factual question. Okay. If you're given such questions, I would always recommend you go back to the passage, reconfirm where the economy drive was mentioned, reread the line again, and you'll find your correct answer. So I'll take you back to where the economy drive was mentioned. Just a minute. Yeah, I'll point the line out. Give me a second. For some reason, nonetheless, I'll point it out. The slide isn't working. I'll show you the answer. Wait.
सी, चलो बताते हैं. So इकोनॉमी ड्राइव में द लाइन सेट इलेक्ट्रिसिटी वो कट कर रहे हैं. Okay, क्योंकि इकोनॉमी ड्राइव चल रही है. That's exactly what the line said. The line means that because the electricity is cut because they are doing an economy drive, it is to conserve energy and resources during the time of scarcity. तो जब conservation होगा तो वो आगे जाके they can use it for a better purpose. The correct answer here is going to be a B. Okay, economy drive है, daylight का time है, they will cut the electricity because it was 1 o'clock in the afternoon. Power cut था, economy drive. Next question, everyone. What is the tone of the author in the passage from 1984 by George Orwell? Tone of the author in the entire passage. What do you think is the correct answer? Tone of the author. If you know the main idea, you'll be able to answer the tone as well. Indifferent, cynical, melancholic, or foreboding. मैं आपको मीनिंग्स बता देती हूँ सारे वर्ड्स के. Indifferent is जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. Cynical is one who doubts everyone. Melancholic is sad. Foreboding is you have a fear something bad is about to happen. The entire story has many negative aspects. The author is not sad, rather, he is fearful. It's cold. The big brother is watching. The correct answer is foreboding. You have a fear something bad will happen in the near future. You have an apprehension. It's a fear in your heart. So it's not sad, but being scared and having fear in the mind. The correct answer is a D. Okay, I think a lot of you got some questions wrong here. My suggestion would be please solve a lot of passages on fiction because fiction is a pretty popular topic in CLAT. You can get many such articles of the same difficulty level. Okay, so I would expect you to solve many articles and passages on fiction. And on that note, the passage ends here. We have launched our CLAT 2024 comprehensive course. If you wish to know more about the program, you can call our counselors on this specific number. And we have a workshop happening on 9th of April, 6 p.m. on why to choose CLAT as a career. So if you wish to attend the workshop, you need to register yourself. It's going to be happening on our app, 9th April, 6 p.m. Make sure you don't miss out on this super informative workshop. Make sure you follow us on YouTube, subscribe to our channel, on Instagram, Facebook, Telegram, and our app on Google Play. The links of everything is there under my video in the description box. I shall see you again with the 14th session on the 50 most common RC topics. That's going to be all for today, everyone. Have a very good day. God bless you.